Hello everyone. So today we are going to discuss the NEET interaction from Minervaa. Now I am Rahul from Minervaa. नाम तो सुना ही होगा. So अब तो हम बहुत मिलने लगे हैं. Already कुछ classes we have interacted, and as we have pan India platform, so for all boards, सब बोर्ड के लिए whatever it is ISC, CBSE, state boards, we are going to discuss about our very important for our recent times. We have 10-12 days left. हम लोग को आज नीट के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करना है ऑन फिजिक्स. सो नीट का प्रिपरेशन तो हम लोग बहुत दिन से ले रहे हैं. 1 महीना 2 महीना ऐसा करके एग्जाम थोड़ा बहुत पीछे चला गया. सो हम लोग भी बोर्ड हो चुके हैं, घर में रह रहकर हम लोग भी बोर्ड हो चुके हैं. सो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन आज हम करेंगे टू मेक योर इंटरेस्ट राइजिंग. तो इंटरेस्ट बरकरार रखना पड़ेगा ऑन फिजिक्स. चलो, सो लेट अस स्टार्ट. लेट अस हैव अ ब्यूटीफुल बिगिनिंग for interaction for NEET. And for NEET we have a very important topic for mechanics. We know very well, if you go through previous years papers for NEET, whatever it was 10 years ago, it was PMT, now it is NEET, any day NEET, AIMS, ZIPMA. If you go through previous years papers, you can get क्या important है. कुछ segments of physics सबसे ज़्यादा important है. That is mechanics, that is heat and thermodynamics, viscosity, surface tension, waves acoustics, electric field, current electricity, modern physics, optics. So these are the most important part of NEET preparation. So for the first day of our interaction, we are going to discuss mechanics. We know आज से कुछ दिन बाद on 13 September we have NEET to sit. तो चलो, just before 15 days, let's have a quick recap of our beloved, of our favorite chapter, mechanics. तो mechanics के बारे में कुछ ना कुछ हम लोग को डिस्कस करना है. Obviously, what kind of problem we can expect for NEET, particularly for NEET. Obviously हम लोग क्या फॉलो करेंगे? The question trend that got changed after years, after last change that happened in the PMT times, that what kind of question pattern got newly introduced, what kind of questions are newly introduced in our syllabus. So those aspirations will be little bit modified. So हम लोग को आज कहाँ से स्टार्ट करना है? मैकेनिक्स से. तो मैकेनिक्स कहाँ से कहाँ तक चलता है? Starting from units and dimension, it will run up to gravitation. So let's start with one of the most important problem for NEET section. Very important. Like suppose you are being given a situation like this for a pulley system. You are given a system like this. Two identical pulleys we have. Obviously they are smooth pulleys, no friction between the rope and the objects and the pulley. Let this mass is m और ये mass है twice m. Let this mass is also m और हम लोग इस rope का दूसरे end को 2 mg force अप्लाई करके खींच रहा है. We are pulling the rope by applying a force 2 mg downwards. So this is very important for us, that we have to find out the ratio. We have to find out the ratio of acceleration in the two cases. So what we need to find out? We need to find out this. We need to find out the ratio of acceleration for these two cases. Now children, we know, बच्चों ये हम सब जानते हैं कि ये connected body system है. So when we have a connected body system, तो ये दो ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी तो सबको करना आता है.
ही पड़ेगा, as we should remember the fact that total answers to be done in NEET 180. So per minute, less than 1 minute time we have to do it. So एक formula हमको याद रखना ही पड़ेगा for this simple pulley system. Then what was the acceleration formula? That was m1 difference m2 into g divided by m1 plus m2. ये difference sign हमने क्यों लिया? Difference मतलब क्या? If m1 is greater than m2, so it will be m1 minus m2. अगर m2 m1 से greater है, तो it will be m2 minus m1. तो चलो m1 को ले लेते हैं m और m2 is taken as 2m. So acceleration क्या बन जाएगा? So acceleration will be naturally 2m minus m whole into g by 2m plus m. So acceleration चलो आ गया g by 3. Acceleration आ गया g by 3 for the pulley 1. For the first pulley system, we are getting the acceleration g by 3. So what about the next case? You can tell me that here also the downward force is 2 mg. Here also the downward force is 2 mg. That is the weight of the pulley, weight of the block. But children, one thing we should remember. एक चीज हमको जरूर याद रखना है कि due to the weight of this block, there will be a tension generated in the rope that will यही जो टेंशन क्रिएट होगा, यही खींच लेगा ये जो स्मॉलर ब्लॉक है इसको. बट व्हाट विल बी द बेसिक डिफरेंस? व्हाट विल बी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिस्टम? कि इधर हम लोग कोई ब्लॉक नहीं फिक्स किया, तो व्हाटएवर वी आर अप्लाइंग इन द रोप दैट इज द टेंशन. व्हाटएवर वी आर अप्लाइंग इन द रोप दैट इज द टेंशन ऑफ द रोप, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग. So when there is a tension already created, this tension is this F, which is pulling the body up with this acceleration. तो इसका free body का equation क्या होगा? When something gets pulled up, we have this equation T minus mg equals to ma. Now see carefully. Here T minus mg. So T minus mg, here I should write ma dashed. Now T, what is tension? Here tension is 2 mg. So it will be 2 mg minus mg equals to ma dash. So m chala gaya, we have taken a common. So finally it becomes g only. For the second pulley system, the acceleration becomes g. So what was our asking? This was asked in the question that find out the ratio of acceleration. So what will be it? A by a dashed. A by a dashed, it has to be g by 3 is to g. So this will be our answer, guys. 1 is to 3. This will be the final answer for this question. So अब हम तुम लोगों को समझा रहा हूँ that we are going to understand that how this process should be taken place. But while you are doing it in the exam, we should keep in mind that we have to do it fast. We have to do it accurately. That is most important. This question, while doing it in exam time, make it fast. The speed and accuracy, these are the two things. चलो एक क्वेश्चन हमको सॉल्व करना आता है, लेकिन हमने 5 मिनट लगा दिया. ऐसा नहीं चलेगा. ऐसा कैसे चलेगा भाई? ऐसा नहीं चलेगा. तो हम लोग को शॉर्टर वे में करना ही पड़ेगा. तो इतना कुछ तुमको लिखने का जरूरत ही नहीं है. हाँ, ये फर्स्ट टाइम हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं अबाउट नीट प्रॉब्लम्स एंड ऑल मैकेनिक्स प्रॉब्लम, तो ये थोड़ा बहुत तो चलेगा ही. तो नेक्स्ट एक टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट इज फ्रॉम मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, व्हाटएवर यू कैन टेल. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. दैट इज, suppose along this vertical wall, you are pressing a block. Suppose this is a vertical wall, this is the block, and I am placing the block by my hand by applying a horizontal force
towards the block like this. So this is I am going to place here. So first of all, there are friction, वहाँ पर friction है, तो between my hand surface and the block, the friction is 0.1. Between the hand surface and the block, the friction is 0.1. Between the block surface and the wall, the friction is 0.2. So what we need to find out, हमको क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है? If we are applying a force 5 Newton, if we are applying a force 5 Newton by our hand horizontally, if we are applying a force 5 Newton horizontally to the block, what will be the mass of the block can be hold there? What will be the mass of the block can be hold there on the wall? तो क्या कर रहे हैं actually हम लोग? What we are doing basically? We are doing a simple thing, that there is a force I am applying. That force is holding the block over there. So block must have a weight that is working down the direction like this. So whenever due to this weight, the block will naturally try to fall down, but there are frictions. There are frictions between the surfaces. So there are two frictional forces working there. So these frictional forces will work upwards. So if I want to hold the block upright there, so total upward force must be equal with total downward force. And total upward force and total downward force, when they are in equal consent, so we reach the equilibrium. So when the equilibrium is reached, then if we can equate all the forces over there, so we can easily find out that what is the mass of the block. How? See very carefully. This was a vertical wall, that red pointed. Now look at the red arrow, that is horizontal, that is perpendicular to the vertical wall. So with respect to the contact surface, that is this, with respect to the contact surface, this perpendicular force is actually producing the normal reaction. This perpendicular force is producing the normal reaction on the wall. So here normal reaction is also 5 Newton. Now as we know, the total upward frictional force equal to the weight. Total upward frictional force equals to the weight of the block. So weight of the block, if it is mg. Now see very carefully, let's take g is 10. It is given g equals to 10 meter per second square. Now as we all know, what is the formula of friction? We know it is coefficient of friction perpendicular by normal reaction. So whenever we are doing it, we can write it, there are two frictional coefficients. So we can write like this, mu1n plus mu2n equals to mg. So finally taking that n common, it will be 5 common into 0.1 plus 0.2 equals to what is mg here? That we don't know, but we know g. That g is how much? 10. So 5 and 10 cancels out. It becomes 2 only. So what is the m remaining? It is 0.3 by 2. So it is 0.15 kg. So this will be the mass. This will be the mass that we can hold for the block on that vertical wall by applying a horizontal force like this. So friction will counterbalance the force of gravity, that is the weight, and we can maintain the equilibrium of the system. So hope बच्चों ये clear है. ये टाइप का प्रॉब्लम हम लोग बहुत कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है. Any day it can be set for the NEET or any kind of competitive exam, especially medical exams. Now चलो एक नेक्स्ट टाइप प्रॉब्लम के अंदर जाते हैं.
So which is also very much important, and at first I am telling you it is based on vector resolution. It's another important issue. It is vector resolution. What type of problem it is? Suppose it's a ceiling, horizontal ceiling जो room के अंदर होता है, छत. That is a ceiling, and this is the vertical wall of a room. So हम क्या कर रहे हैं? By the help of some ropes, कुछ रस्सी से हम लोग क्या किया? एक weight को suspend किया. We are suspending a weight. And remember, there is no friction here. There is no friction. चलो इस रस्सी का टेंशन हुआ T1 to hold it at a balance, and this is kept at T2 for tension T2. इसका जो weight है, let it be W, and this rope is creating an angle theta with the horizontal ceiling. The question is, क्या निकलना है हमें? We have to find out the values of the tension T1 and T2. We have to find out the values of tension T1 and T2. So how can we execute this problem? कैसे solve करना होगा? I have already told you, I have already introduced that this method, this numerical is based on vector resolution. So if I do the vector resolution along this direction, so this has to be the alternate angle. ये दोनों angle equal होगा, alternate angle. So if it is T1, this has to be T1 cos theta, and this has to be T1 sin theta. Now अच्छा से देख लो बच्चों क्या हो रहा है. That is whenever we are equating the forces, this is an equilibrium created. Here is an equilibrium once again, that there are multiple forces in the system working, but no such effect, that is the net effect is becoming zero. If the net effect is zero, so there will be no subsequent motion. कोई मोशन नहीं रहेगा ये सिस्टम का. सो जो सिस्टम हम लोग अंडरगो कर रहे हैं, दैट सिस्टम इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? दैट इज टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, एंड साइडवाइज फोर्सेस आर आल्सो इक्वल. सो देयर इज नो अप एंड डाउन मूवमेंट एंड देयर इज नो साइडवाइज मूवमेंट. नाउ तो इधर से सिंपल सा बात हम लोग को यह मिल गया कि W equals to T1 sin theta. So इधर से हम तो एक स्टेप जंप तो कर ही सकते हैं कि W by sin theta and 1 by sin का रेसिप्रोकल है cosec. So this is our ready answer, that W equals to T1 equals to W cosec theta. Now what about T2? If I write about T2, see very carefully. T2 is along this direction, and along this direction we have T1 cos theta. So if I want to maintain the sidewise movement equilibrium, so T2 should be equal with T1 sin theta. Now if I put the value of T1 over there, if I put the value of T1 over there, what will be the change? Here T2 equals to, we can write it is T1 cos theta. When T2 equals to T1 cos theta, so in place of T1 I can put this value over there. So it will be W cos theta by sin theta, because I am putting this value of T1 here. Now if I put this value of T1 here, cos theta by sin theta will definitely become cot theta. So my other answer is also ready, that is W cot theta. But children, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे W, T1, T2 ये फॉर्मेट में ना आए. जो मैक्सिमम हो सकता है कि ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आएगा,
कि T1 T2 का वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगा। सोचो W का वैल्यू दिया गया 20 kg वेट, 30 न्यूटन, थीटा का वैल्यू दिया गया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। तो ऐसे हम लोग को करना पड़ सकता है, which is very very important. Now ये सब करने के बाद ये था इक्विलिब्रियम, फ्री बॉडी डायग्राम लिटिल बिट। इसके बाद हम लोग एक दूसरे टाइप का प्रॉब्लम करते हैं, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट। हर वक्त डिफिकल्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इजी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, ट्रिकी क्वेश्चन। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन के अंदर हम लोग अभी जाएंगे। एंड व्हाट अबाउट दैट क्वेश्चन? सिंपली दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मोशन, you can say uniform or non-uniform motion. So I am writing it simply. The two types of question I will discuss. That is, suppose the velocity displacement relation of a moving particle. एक पार्टिकल चल रहा है, it is moving, तो इसका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज ऑब्वियसली v चिल्ड्रन, एंड s ये तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा ही। तो इन दोनों का बीच में एक रिलेशन है, दैट इज v इक्वल्स टू k रूट s, v इक्वल्स टू k रूट ओवर s। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इट्स एक्सीलरेशन, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इट्स एक्सीलरेशन, What will be the nature of its acceleration? Acceleration का टाइप कैसा होगा? चलो ऐसा ऑप्शन भी दिया जा सकता है कि वेरिएबल, सिंपल सा वेरिएबल, नेगेटिव, डिक्रीजिंग, यूनिफॉर्म, इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया गया। तो ये क्वेश्चन में एक चीज जरूर मेंशन किया जा रहेगा, that is k is a constant which is greater than 0, k is a positive constant, ये क्वेश्चन में हमेशा मेंशन रहेगा। तो हम लोग को देखो कैसे ये सॉल्व करना है, which is a very important and very easy type of problem, that is v equals to k root s. If we can square it, it will be v square equal to k square into s. बच्चों एक चीज हमको पता है कि हम लोग एक्सीलरेशन जैसे लिख चुके हैं कि एक्सीलरेशन है dvdt, तो एक्सीलरेशन अगर dvdt है, इधर तो t का फंक्शन नहीं है, इधर जो वेलोसिटी दिया गया है इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो हम लोग कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे? तो एक्सीलरेशन जब dvdt है, इसको हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि dvds into ds dt, ऐसे चेन रूल में हम ब्रेक कर सकते हैं। सो ds dt विल बिकम v एंड एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा v dv ds, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा v dv ds। अब हम ऐसे इसको कैसे कर सकते हैं? ऑलरेडी v के साथ s का रिलेशन है, तो तुम dv ds आसानी से निकाल सकते हो, v के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड यू विल गेट द एक्सीलरेशन। बट ये हम लोग नहीं करेंगे, हमको क्विकर मेथड में करना है और एक्यूरेट करना है। सो हमने क्या किया, v को डायरेक्टली स्क्वायर किया, तो v बन गया v स्क्वायर, तो v स्क्वायर आ गया k स्क्वायर इनटू s। इधर k कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो k स्क्वायर भी कांस्टेंट बनेगा तो इधर से हम लोग एक डिफरेंशिएट करेंगे, v दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू s। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सो इट विल बी सिंपली 2v dv ds, इट विल बी सिंपली 2v dv ds, और ये साइड k स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि s का डिफरेंशिएशन s से 1 देता है। तो इस 2 को इधर लेके जाओ, तो v dv ds आ गया k स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज नथिंग बट आवर एक्सीलरेशन, यही हम लोग का एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन क्या आया? कांस्टेंट बाय 2, कांस्टेंट की k इज अ कांस्टेंट, तो k स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा ही होगा, एंड कांस्टेंट बाय 2 इज अनदर कांस्टेंट, तो हम लोग का एक्सीलरेशन क्या आया? सो डेफिनेटली इज अ कांस्टेंट, तो दिस विल बी आवर राइट आंसर
For this situation, the particle is moving with uniform acceleration. For this particular system, the particle is moving with uniform acceleration. ऐसा ही, by the same application, there can be another type of problem. By this type of same application, we can have another type of problem. What type of problem? See very carefully, very carefully. सोचो, एक इक्वेशन दिया गया है, ऐसे दिया गया है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, इट इज अगेन वेलोसिटी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन. हाउ इट इज गिवन? v equals to root over 49, v equals to root over 49 plus 24s. v equals to root over 49 plus 24s, and we have to find out the acceleration again. We have to find out the acceleration again. तो हम लोग अभी एक चीज किया वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का, तो हम लोग का दिमाग में यही घूम रहा है कि हम लोग स्क्वायर करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2v dvds आ जाएगा, 2 को दूसरे साइड में देंगे, काम खत्म. इतना भी नहीं करेंगे. कुछ सिचुएशन में ना इतना भी करना नहीं चाहिए. क्या करना है? इसको डायरेक्ट स्क्वायर करो. तो v स्क्वायर क्या आएगा? इट इज 49 प्लस 24 इनटू s आएगा. तो इसको कंपेयर करो इससे, जो बहुत फेमस इक्वेशन है. तो ये हो गया u स्क्वायर 49 स्क्वायर, तो u आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड. ये अगर मीटर पर सेकेंड में है, ये आ जाएगा u. और इसको कंपेयर करो ये डिस्प्लेसमेंट छोड़ के, तो 2 इंटू एक्सीलरेशन इज 24, तो एक्सीलरेशन चलो आ गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो पहले 1 मिनट लगा था, अब 30 सेकेंड लगेगा इस टाइप का प्रॉब्लम में. जो 1 मिनट में हम लोग डिफरेंशिएट करके करेंगे, अभी इस टाइप का कंपैरिजन मेथड में हमको 40 सेकेंड के आसपास टाइम लगेगा. गॉट इट? श्योरली तुम लोग भी ये सब रिकैप कर रहे हो, मैं भी तुम लोग के साथ फिर से एक बार लर्न कर रहा हूं. डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम. अरे डिस्टेंस तो हम लोग के बीच में बहुत बढ़ गया है, अब सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है, बहुत बढ़ गया है. लेकिन फिर भी वी आर इम्प्लाइंग, वी आर फोकस्ड फॉर आवर एग्जाम, वी आर अप्लाइंग आवरसेल्फ. थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड हम लोग को यूज करना है. नाउ whenever we are going towards this type of problems, let's discuss another problem on mechanics. और इसके लिए हमें एक रीजन चाहिए, एक प्रॉपर रीजनिंग चाहिए. that is very much important for all type of competitive exam, whether you are sitting for NEET, whether you are sitting for AIMS or any kind of competitive exam you are sitting for. There is a equilibrium principle. तो एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा तो हम लोग देख लिया कि इक्विलिब्रियम का आता है कि जहां पे all type of forces are working but the net forces is coming as 0. बट एक चीज तो ऐसा आ ही सकता है कि सपोज द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज द फंक्शन ऑफ पोजीशन. सपोज एक पार्टिकल इज सिचुएटेड ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज रिप्रेजेंटेड एज फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन. तो ये अगर 3 डायमेंशन में होगा इट इज इन 1 डायमेंशन, ये अगर 3D में होगा you can write it is function of r, where r is the position vector. We know that is xi cap plus yj cap plus zk cap. तो from this particular concept हम लोग क्या बोलने को जा रहा है? Whatever we are planning to tell from here, that is highly important, because always remember, if you need to find potential positions of equilibrium, if you need to find the points of equilibrium, your basic approach will be from this situation, it will be du dx equals to 0. This is the condition of equilibrium. This is the condition of equilibrium. You will definitely get some solution of x. You will definitely get some solution of x from this polynomial.
if you do a second order differentiation of this potential, second order differentiation, that is d2u by dx square, and you are putting the solution in the second order, and you are getting a greater than 0 value from the concept of maxima and minima. The second order derivative of a function, if it is greater than 0, it tells that the function is minimum. So when the potential energy is minimum, remember guys, बच्चों ये बहुत अच्छा से याद रखना, whenever a system is under minimum potential energy, its stability will be maximum. एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी सोचो, when an electron is at the ground state and तुम इसको excited state में उठा दिया, so whenever you have applied some energy on it, by having that excess of energy, it has gained the excited state. लेकिन excited state में क्या हुआ, जिंदगी भर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, because excited state is an unstable state. क्यों? That instability comes from that excess of energy. So it will definitely try to release the energy and it will reach to the ground state. That is its stable condition. So excess of energy means instability. Minimum of the energy means most stability. So अगर ये condition तुम पाओगे, so that is definitely it will be called stable equilibrium. And if you get du by dx square that is less than 0, you will get unstable equilibrium. So these we need to remember always when we are dealing with this type of situation. And इधर से जो x का वैल्यू मिला, अगर यही वैल्यू हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u में पुट कर देंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न करेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू इट विल रिटर्न. दैट कांस्टेंट वैल्यू इज डिनोटेड बाय k व्हिच इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट. ये हम लोग का जान पहचान वाला चीज है, फिर भी मैं एक बार दोहरा रहा हूं कि force constant and equilibrium related problems are always important for all type of competitive exams, whatever it is NEET, JEE Mains, advanced, everywhere. So हम लोग का ये बहुत important type का question मिला. That is देखो कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि let's take potential energy of a point, potential energy at a point u equals to ax cube minus bx square. It is ax cube minus bx square. So if it is ax cube minus bx square, तुम्हें ये पूछा जा सकता है कि find out the point of equilibrium. Find out the point of equilibrium. तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है इधर से. Find out the point of equilibrium, find out the force constant. What will be the force constant? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है. तो कैसे करेंगे हम लोग? बहुत ही सिंपल आइडिया है, जो इधर शेयर किया वही करेंगे. u इक्वल्स टू दिया हुआ है ax क्यूब माइनस bx स्क्वायर. So if we differentiate this du dx, it will be 3ax square minus 2bx, or 3ax square minus 2bx. If I want to have the equilibrium condition, so for condition of equilibrium, this du dx should be 0. So 3ax square will be 2bx under this condition, du dx equals to 0. So x I am getting as 2b by 3a. Here I am getting as the x, that is the point of the equilibrium. तो आंसर ऑप्शन कैसा रहेगा? पॉइंट पूछा गया, ये सिंपल सा बात है. देखो दिस इज द इक्वेशन इज ओनली वैलिड अलोंग x एक्सिस. तो x एक्सिस में बाकी दो कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 हो जाता है. तो हम लोग का जो आंसर ऑप्शन में रहेगा वो इस टाइप का फॉर्मेट में तुमको मिलेगा 2b by 3a, 0, 0 ऐसा.
तो ऐसा ही 2b/3a को डिफरेंट पोजीशन में दिया जाएगा कि 0 2b/3a 0 0 0 2b/3a ऐसा ऑल्टरनेट करके दिया जाएगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द राइट आंसर एज वी आर डूइंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और नेगेटिव एक्स एक्सिस व्हाटएवर इट इज, ये एक्स कोऑर्डिनेट का बात है तो y एंड z कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो एक क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन है फोर्स कांस्टेंट। अभी हम लोग निकाला कि फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है d2u dx²। तो चलो फोर्स कांस्टेंट भी कर लेते हैं, इसका वैल्यू है d2u/dx²। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, इजीली बच्चों ये आएगा 6ax - 2b। अच्छा, व्हाट वाज द कंडीशन टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम? क्या था कंडीशन? x का जो सॉल्यूशन मिला, x का जो सॉल्यूशन मिला उसको ही हमको सेकेंड ऑर्डर में पुट करना है। क्या सॉल्यूशन मिला? 2b/3a and we have to put it in the second order, so it is 6a into 2b/3a minus 2b। तो कितना आएगा? So definitely 3a and 6a cancelling out, it is 4b minus 2b, so force constant is coming as 2b। definitely it is a constant because we know, ये तुम्हें इंट्रोडक्शन देने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा सिचुएशन में a b ये सब टर्म कांस्टेंट ही होता है। तो हम लोग आज एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्या क्या डिस्कस किया हम लोग न्यूटन्स लॉ का प्रॉब्लम डिस्कस किया, फ्रिक्शन का प्रॉब्लम डिस्कस किया, वेक्टर रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम डिस्कस किया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन दैट इज एक्सीलरेशन वेलोसिटी रिलेशन डिस्प्लेसमेंट उसका प्रॉब्लम डिस्कस किया, एंड डेफिनेटली दिस एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया। तो बच्चों स्क्रीन में तुम लोग देख रहे हो कि एक ईमेल आईडी जा रहा है, राइट, जा रहा है। तो उसमें तुम लोग का जो डाउट्स है वो हम लोग के पास भेजो। कुछ दिन बाद एग्जाम है, राइट, देयर आर वेरी फ्यू डेज लेफ्ट। सो जो भी तुम्हारे मन में दुविधा है, डाउट्स है, क्वेश्चंस है, कुछ प्रॉब्लम तुमको अटक रहा है तो भेजो विदाउट एनी, बेझिझक भेजो, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो हम लोग का जो टीम है, जो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का, जो भी सब्जेक्ट है, नीट के लिए हम बोल रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए ही बोलेंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो हम लोग का टीम है, विल गेट बैक टू यू, विल रिप्लाई योर क्वेरीज as soon as possible। Our technical team will get back to you and get back with your replies, okay? And keep subscribing our channel, this mock test for you, okay? For this particular EduBet mock test for you, Minervaa, we are from Minervaa, and please subscribe us on, subscribe करते रहिए on YouTube, social media, website, everywhere, and you will be benefited undoubtedly। कुछ तो सीखने के लिए मिल रहा है। End of the day that matters। There is a popular song in the end that doesn't even matter, it does matter, okay? So this is the important thing। So फिर मिलेंगे बहुत जल्द on another topic of NEET, which is another interesting one that we will be generating very soon। So keep stay tuned, फिर मिलेंगे। Now we are signing out for this class।